Dear guests, I am pleased to welcome you all to the second International Conference on Maternal Child Health Nutrition, the theme being tackling anemia, malnutrition, and food systems affecting health in developing countries. Today's conference is a sequel to the first conference held in 2018, that was prior to COVID. It was attended by more than 200 subject matter experts, including those from Nepal, Bangladesh, Malaysia, and USA. This conference will facilitate open exchange of ideas and deliberate on strategies that will be effective in combating anemia and malnutrition. Before we deep dive into addressing issues and challenges and sharing innovative ideas, please allow me to tell you Sukarya's story. As a proud Sukaryan, it gives me immense pleasure to share that Sukarya is celebrating its 25 glorious years of giving back to the society under the tutelage of its founder and chairperson, Ms. Meera Satpathy. Thank you, lovely audience. We now have a short film for you to showcase Sukarya's journey till now. Improving maternal child health nutrition and adolescent health has been an integral part of Sukarya's mission since 1998. A comprehensive approach is adopted for each of our projects, as nutritional issues are not just about lack of food and resources, but also about lack of access, knowledge, information, dietary habits, socio-cultural dynamics, and gender aspects. That's the reason, while working in the villages and urban slums of Delhi, Haryana, and Rajasthan, we come across many women who do not have access to any medical help, even during childbirth. Sukarya's health clinic provides essential antenatal and postnatal checkups, disbursement of medicines and nutritional supplements, counseling sessions on how to fight anemia and malnutrition. Over the past 25 years, Sukarya has reached more than 7 million women and children living in more than 760 villages and 190 slums by partnering with individuals, funding agencies, and corporations through its multiple project implementations in Delhi, Haryana, and Rajasthan. Our constant endeavor is to better the lives of underprivileged women, children, and adolescent girls. May I now request Ms. Meera Satpathy to please light the lamp, a symbol of igniting of thought and enlightenment. Farjana ji and Maksudan, आप सब दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैम को अकम्पनी करें. मिस फरजाना इज अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एंड मिस मकसूदान is a beneficiary. Miss Meera Satpathy is an epitome of compassion, being the founder and chairperson of Sukarya and the main force behind the organization that was born out of her vision. We request her to set the context for this conference and also say a few words about Sukarya. Distinguished guests, esteemed delegates, partners in progress, ladies and gentlemen. A very warm and heartfelt welcome to each one of you as we convene here in the vibrant city of Delhi for the International Conference on Maternal Child Health and Nutrition 2023. It is with immense pride and humility that I stand before you as the chairperson of Sukarya, an organization that has dedicated the last 25 years to the cause of improving maternal child health and nutrition at the grassroots level. Together, we are not only shaping the discourse around global health, but also reaffirming our commitment to securing a healthier future for the generations to come. We are honored to have experts not just from India, but from Nepal,
Bangladesh, Malaysia, and the USA and the Netherlands. Clearly, the issues we are addressing have global relevance and urgency. It is inspiring to witness the power of collective determination as we come together from different corners of the world, united by our shared vision to combat anemia and malnutrition that continue to cast a shadow over the lives of countless mothers and children. We embarked on this journey not as mere bystanders, but as active participants in the lives of those who are often invisible and forgotten. Our approach has always been holistic, recognizing that true progress comes from addressing health challenges within the broader context of social, economic, and cultural factors. Our focus areas are closely integrated and aligned to address the range of important priorities like gender bias, adolescent empowerment, and financially empowering the women. Over the years, Sukarya has embraced the spirit of partnership, collaborating with communities, local governments, and like-minded organizations to craft interventions that are relevant and sustainable. Our journey has been one of learning, adapting, and constantly refining our strategies to ensure maximum impact. Sukarya stands as a shining example of an effective change-making nonprofit that achieves remarkable results with minimalistic resources and dedicated team of volunteers. Here is why it is so impactful. A focused mission, community-centric approach, volunteers, dedication, efficient resource utilization, innovative solutions, advocacy, and collaboration, and our emphasis on sustainability, ensuring that the positive changes we initiate continue long after our direct involvement. However, our potential as an implementing nonprofit is often constrained by resources, capacity gaps, institutional challenges. This is where the global community can play a pivotal role. I urge our supporters, partners to recognize the transformative potential of supporting organizations like us. To continue to walk the path of the mission, we need mentorship, knowledge sharing, and bridging of the capacity gaps. Our work over the last 25 years is a testament to the fact that it is possible to push boundaries, and it is possible even to champion change when hearts and hands unite, even with minimalistic resources. I extend my deepest gratitude to all the participants, sponsors, partners, and volunteers who have gathered today to address the most serious yet least addressed developmental concerns. Today, there is an urgent need to link maternal child health, nutrition, malnutrition, food system with human and economic progress to strengthen nutrition interventions and ensure more efficient use of available resources. So let's embark on this journey together. Let's remember that our actions today will determine the health and well-being of generations yet to come. Let us leave a legacy of compassion, determination, and collaboration that inspires change far beyond the confines of this conference hall. Let me repeat what I said in Sukarya's conference in 2018. We must free women and children
from the prevalence of anemia and malnutrition in our society. This is a dire need and foremost priority. So the time is to act now. Thank you. May our shared commitments drive us to shape a healthier, more equitable world for all. Thank you. We're moving on to the next segment, that is Voices from the Community. सुकार्य द्वारा हमारे गांव में आसपास के गांव में स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्य जागरूकता सत्र एवं साफ सफाई अभियान का आयोजन किया जाता है, जिसमें सुकार्य के साथ साथ हमारी पंचायत भी बराबर सहयोग करती है। इससे महिलाओं और बच्चों को दवाई, खून की जांच एवं उचित मार्गदर्शन से ग्रामीणों को बहुत लाभ पहुंचता है। मेरा नाम फरजाना है। मैं नूह जिले की बदोपुर गांव की रहने वाली एक महिला हूं। मेरा गांव अभी भी आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे है। स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर CHC यानी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पड़ता है, 15 किलोमीटर आगे, जहां पर महिला और बच्चों को आसानी से पहुंचने में दिक्कत होती है, वो पहुंच नहीं पाते वहां पे। सुकार्य संस्था हमारे गांव में आकर स्वास्थ्य क्लिनिक लगाती है, जिससे हमारे महिला और बच्चों को दवाई, खून की जांचें एवं उचित सलाह मिलने से बहुत लाभ मिला है। पहले सरकारी अस्पताल दूर होने के कारण वहाँ के लोग सरकारी अस्पताल से इलाज नहीं ले पाते थे, वो वंचित रह जाते थे उससे। सुकार्य की घर से शुरू और अन्य जागरूकता अभियान के कारण लोगों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व है कि मैं सुकार्य के इस सहयोग में मैंने भी अपना योगदान बहुत बड़ा दिया है। Good morning everyone. This is the story of Maksudan and she is Maksudan. मेरा नाम मकसूदन है। मैं गांव नगली नूह हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे पति गांव में बाल काटने का काम करते हैं। मैं भैंस पालकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हूँ। मुझे 5-6 महीने पहले हमेशा कमज़ोरी और थकान महसूस होता था और कभी कभी चक्कर भी आते थे, जिसके कारण मैं घर का काम एवं अपनी आमदनी की साधन मेरी भैंस बफेलो की देखरेख नहीं कर पा रही थी। इसलिए मजबूरी में मुझे अपनी भैंस को मेरे मायके भेजना पड़ा था। इसी बीच मुझे सुकार्या के CSW मीन्स कम्युनिटी हेल्थ वर्कर से पता चला कि सुकार्या संस्था हमारे गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य क्लिनिक लगाती है, जहां पर जांच में पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है, जो कि 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर था। जिसके बाद डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और पौष्टिक खाने के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। उन्होंने हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू, मोटा अनाज मीन्स मिलेट्स आदि खाने की सलाह दी और लोहे की कढ़ाई आयरन वेसल्स में खाना पकाने के बारे में बताया। मैं डॉक्टर के बताए अनुसार ही खाना और दवाई खाने में लगी। 3 महीने बाद जब मेरी दोबारा जांच हुई तो पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़कर 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया है और मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है। The next story is of Uganta. She is currently not present here as she delivered her baby just 1 week ago. उगंता अपने परिवार के साथ जिला अलवर के गांव मलियार गुजर राजस्थान में रहती है। जब वह 3 महीने की गर्भवती थी तब वह सुकार्या की कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के संपर्क में आई। पुरानी सोच और पारंपरिक मान्यताओं में विश्वास रखने वाली उसकी सास रजनी का मानना था कि पहले घर के सभी आदमी जैसे कि ससुर, पति व बच्चों को खाना खाने के बाद ही औरतों को खाना खाना चाहिए, खास तौर पर बहुओं को। इसलिए उगंता को इस मान्यताओं को मानते हुए आखिर में खाना मिलता था, जिसका नतीजा यह होता था कि कई बार खाना कम पड़ जाता था और जिसकी वजह से उगंता को कई बार भूखे भी सोना पड़ता था। एक दिन सुकार्या टीम द्वारा उनके गांव में गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की एक बैठक आयोजित की गई। शुरुआत में विरोध करने के बावजूद सुकार्या की कम्युनिटी हेल्थ वर्कर राधा के प्रयास से रजनी भी अपनी बहू उगंता के साथ बैठक में शामिल हुई।
इस चर्चा में उसे एहसास हुआ कि उनकी पारंपरिक मान्यताएं उगंता के स्वास्थ्य और उनके अजन्मे पोते के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। रजनी ने निश्चिंत किया कि उगंता को परिवार के साथ पोषण युक्त खाना खाए। आगे रजनी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखने लगी, उसे अपने साथ बैठाकर खाना भी खिलाने लगी। साथ ही रजनी बहू की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए भी तैयार हो गई। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी एक सप्ताह पहले ही 15 सितंबर 2023 को उसने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तिजारा में 3.5 किलोग्राम की एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। मेरा नाम मेमन है, मैं नालापार कैंप दिल्ली में रहती हूँ। मैं सुकार्य में सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में कार्य करती हूँ। प्रोजेक्ट एनीमिया एवं कुपोषण नियंत्रण परियोजना हमारी कम्युनिटी में सुकार्य संस्था में की जो सुविधाओं के कारण महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। स्वास्थ्य कैंप में हम बेनिफिशरीज़ को हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। MBBS डॉक्टर के द्वारा परामर्श, दवाइयाँ, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आदि देते हैं और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी करते हैं। मेरा नाम डॉली है और मैं इंदर कैंप दिल्ली में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं। या जो CHW वर्कर जब जा के लोगों के घरों में जब उनके बारे में जानकारी दे रही थी, बता रही थी, तब उस दौरान मेरी मुलाकात उनसे हुई क्योंकि मैं 2 महीना गर्भावस्था में थी और उस समय मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसके साथ साथ मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी थी। जेस्टेशनल का मतलब है कि मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ, ये खान पान नहीं, बहुत कमज़ोरी, और मुझे बताने के लिए कोई वहाँ पे नहीं था। लेकिन मुझे CHW वर्कर ने मुझे जब बताया कि ऐसी बातें हमारे स्वास्थ्य क्लिनिक में आई है सुकार्या में, और जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 8.6 था मेरा। तो उसके बाद मुझे सलाह दी गई जो वहाँ के डॉक्टर्स, उन्होंने मुझे बताया कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, फॉलिक एसिड दी गई, और साथ ही साथ पौष्टिक सलाहकार ने मुझे ये भी बताया कि आपको चना, गुड़ और हरी सब्जियां पत्तीदार में खानी है और लोहे की कढ़ाई में खाना बना के भी खाना है। तो उससे धीरे धीरे मैं फॉलो करती रही और जाती रही, उनकी स्वास्थ्य क्लिनिक में जाती रही, और लगातार फॉलो करने से मेरा क्या हुआ, 8.6 से 11.1 मेरा खून बढ़ गया। जब महिला गर्भ अवस्था में होती है ना, तो हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है। घर का काम करके छोड़ के जाना, वहाँ पे लाइन में खड़े होना, कैसे ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, कैसे बार बार हमारा ये ब्लड हीमोग्लोबिन चेक होगा। लेकिन सच में मैं हाथ जोड़ के सुकार्य टीम का इतना धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे एरिया में आए और हमारा सही टाइम पे और सही वक्त पे बार बार ब्लड प्रेशर चेक करना, हीमोग्लोबिन चेक करना, हमारा वज़न चेक करना, सब कुछ वहाँ उन्होंने हमें बताया। जो उनका स्वास्थ्य शिविर है उसमें हमें ये भी बताया गया, मुझे बताया गया कि कैसे अपने बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाना है। सिर्फ माँ का ही दूध बहुत ज़रूरी है और डिलीवरी घर पे ना करके हॉस्पिटल में होनी चाहिए। नाम आशिया है, मैं रंगपुरी पहाड़ी के नालापार कैंप दिल्ली में रहती हूँ। यह एक पिछड़ा हुआ इलाका है जहां सुकार्य की टीम पिछले कुछ सालों से लड़कियों एवं महिलाओं को जागरूक कर रही है। इन्होंने किशोरी लड़कियों को अलग से ट्रेनिंग दी जिसमें उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां दी गई, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, सेक्सुअल हेल्थ एंड राइट्स और एनीमिया के बारे में बताया गया। साथ ही हमें माहवारी के दौरान साफ सफाई, HIV एड्स, प्रजनन इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें सभी महिलाएं, लड़कियां अपने अधिकारों को जान पाई और उसे अपने जीवन में भी शामिल कर पाई। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी के दौरान हमारे एरिया की लीड्स गर्ल ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत ही बड़ा सराहनीय काम किया। उन्होंने लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक किया, ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचाया तथा मेडिकल किट पहुंचाई। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि मैंने अब ठाना है कि मैं हर किशोरी को भविष्य में एक सशक्त माँ के रूप में देखना चाहती हूँ। मेरा नाम स्वीटी है, मैं सूरतनगर गुरुग्राम में रहती हूँ। हमारे मोहल्ले में आज भी लड़कियों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित और उनके अधिकारों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है क्योंकि उन्हें ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। इस सुकार्य संस्था के द्वारा मेरे मोहल्ले में लड़कियों को जब पहली बार प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य, HIV एड्स, पीरियड्स के बारे में बताया गया, उसके बाद मेरा सोचने समझने का नज़रिया बदल गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक लीड गर्ल होने के नाते मैं अपने मोहल्ले में लड़कियां और औरतों के साथ एक मीटिंग करती हूं जिसमें उन्हें समझाती हूं और उन्हें कहती भी हूं
कि हमारे समाज में सशक्त किशोरियां ही भविष्य में सशक्त और स्वस्थ माँ बनेंगी। Moving on now, I would like to invite Team Saptak, directed by Mr. Mihir Basu, on the stage here, please. Our last presentation is basically integration song. The song says that we'll go together, we'll work together. And I think whatever we have heard so far, that this is the motto of the Sukarya. These messages are to applaud and appreciate Sukarya's efforts. These messages are from the Governor of Rajasthan, from Madam Shobha, who's the Minister of State Agriculture, Government of India, from our partners Global Washington and Department of Global Health, University of Washington. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues and distinguished guests, it is an honor and privilege for us at the University of Washington in the Department of Global Health to extend a warm welcome to all of you on behalf of the International Conference on Maternal Child Health and Nutrition, a conference organized by Sukarya, a highly effective grassroots organization that has been making a difference in the lives of women, adolescent girls, and children for the last 25 years. With a focus on how to tackle anemia, malnutrition, and food systems affecting health in low and middle income countries, this conference seeks to address some of the most pressing challenges facing our world today. From advancing medical breakthroughs to innovative interventions, from addressing health disparities to fostering international collaboration, this conference is poised to make a significant impact on the trajectory of global health and promises to be an exceptional platform for sharing knowledge, insights, and groundbreaking research in the field. As a knowledge partner, we anticipate insightful discussions, engaging sessions, and the exchange of ideas that will pave the way for transformative action in healthcare practices and policies. It is a shared responsibility that requires the collective efforts of healthcare professionals, researchers, policymakers, and advocates from all corners of the globe.
Dr. Tickle from our school is participating in this conference, and we are proud to be a part of this transformative experience. We look forward to shaping the future of maternal and child health together, working side by side with Sukarya on its projects for marginalized communities in India. Thank you for your attention and enjoy the conference. Hello, and greetings from Seattle, Washington. On behalf of Global Washington and our 150 members, I would like to welcome you to the 2023 International Conference on Maternal Child Health and Nutrition, hosted by Sukarya. We are honored to be a global community partner for this year's conference. Global Washington is a network of for-profits, nonprofits, academic institutions, and philanthropists who are based in Washington State and doing work to improve lives in the Global South. Sukarya is a member of Global Washington, alongside Microsoft, Amazon, Starbucks, the Gates Foundation, PATH, University of Washington, and several others in our vibrant network. It's been a privilege to partner with Sukarya and get to know their holistic and groundbreaking work. As you know, Sukarya is a leader in advancing solutions to the Sustainable Development Goals, in particular SDGs 1 through 6, which covers reducing poverty and hunger and aims to improve health, quality education, gender equality, and WASH. It's no surprise that Sukarya is the force behind this conference today, as they've been working for the past 25 years to empower communities and enhance health for mothers and children. Mira, Dash, and others at Sukarya also understand what it means to work in partnership and to collaborate and really co-create programs that are sustainable. Together, we can make a difference. It's inspiring to have so many esteemed speakers and attendees gather today to discuss one of the world's most pressing problems. This conference is also a bridge between India and Seattle, and I hope this strengthens the flow of creative solutions and builds lasting relationships. Enjoy the conference, and I hope you come away inspired and energized to continue this vital work to improve lives and make the world a better place. Thank you. Dear audience, it is a privilege to be able to give the vote of thanks on the occasion of 25 years of tireless work by Sukarya and hosting the second international conference on maternal child health nutrition, the theme being tackling anemia, malnutrition, and food systems affecting health in developing countries. Deep gratitude for the esteemed speakers who are here today, our partners NCEAR-A, National Center of Excellence and Advanced Research on Anemia Control, IFPRI, International Food Policy Research Institute, the Maternal and Child Health Program at the Milken School Institute of Public Health at George Washington University, Washington, D.C., University of Washington, Seattle, and Global Washington. People from the media, entire team of FICCI putting this up here for us, and the strong staff of Sukarya holding this event on their shoulders, guided by none other than Ms. Meera Satpathy.